Hello everyone, how are you? So यहाँ पर हम मार्केट का एनालाइज करेंगे आज की न्यूज़ के हिसाब से। आज हम देख सकते हैं दो बड़ी न्यूज़ आने वाली हैं। एक है 5:30 PM मेरे टाइम जोन के हिसाब से, आफ्टर लाइक 23 मिनट्स एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है डॉलर के लिए, जो कि होगी कोर PCE। और द नेक्स्ट वन इज़ एट 7 PM, जो कि कंज्यूमर सेंटिमेंट के लिए होगी। तो ये दोनों न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है ऐसी न्यूज़ के ऊपर, इन न्यूज़ के ऊपर। फ़िलहाल के लिए देखा जा सकता है यहाँ पर क्रूड ऑयल और गोल्ड हमारे पोटेंशियल जोन्स के अंदर पहुँच चुके हैं। गोल्ड की इस टाइम मैंने ट्रेड भी ली हुई है। यहाँ पर आई गेस मेरी एंट्री है, या एग्जैक्टली, या मे बी ही है। ऑलमोस्ट इधर हमारी एंट्री है और हम टारगेट कर रहे हैं प्रीवियस हाई को ब्रेक करना, जो कि हमारा रहेगा। Let me just mark it. Just 1 second. So this would be our entry. This would be our stop loss. Exactly beneath this secondary structure, yeah. And this would be our target. This would be our first target, and the final target can be exactly below this zone. थोड़ा सा इसके नीचे रख लेंगे ताकि अगर मार्केट लिक्विडिटी ज़्यादा देती है तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। भाई प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। जी जी, इंग्लिश में भी स्ट्रीम करेंगे जॉटेक्स। फिलहाल के लिए आप उर्दू में एंजॉय करें। आपको इंग्लिश समझ आती है या नहीं जॉटेक्स, या उर्दू समझ आती है, ये बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो गाइज यहाँ पर DXY को भी देखते चलते हैं। आज इसके ऊपर भी हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। प्री न्यूज़ के अंदर हम देख सकते हैं जैसा कि हमें थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला है इस जोन से, ये इस रेजिस्टेंस से हमें एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला है। तो लेट्स जस्ट मार्क इट एंड लेट्स जस्ट सी के इसको इस न्यूज़ पर अगर ब्रेक कर दिया जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये वाला जोन DXY के लिए। तो फिलहाल के लिए एक अच्छा रिजेक्शन मिल चुका है DXY को इस जोन से। अब देखना पड़ेगा कि न्यूज़ किस लिए, किसके लिए पॉजिटिव आती है। डॉलर के लिए पॉजिटिव आती है या डॉलर के लिए नेगेटिव आती है। नास्डैक की बात करें तो नास्डैक हमें थोड़ा सा सपोर्ट के ऊपर अपथर्स दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है यहाँ पर नास्डैक की, ये वाला लो इसको फ्लश किया है, थोड़ा सा ऊपर गई है। हमें स्टिल नास्डैक के अंदर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मज़ीद नीचे आने के भी चांसेस हैं। न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर बुलिश नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये हो सकता है इस जोन से ही ब्रेक कर दे, और अगर हमें यहाँ पर एंट्री मिल गई तो फॉर श्योर मैं ट्रेड लेने की ट्राई करूँगा इसके अंदर। अगर बाकी मार्केट कंडीशंस भी यहाँ पर मैच होती हैं तो इसके अंदर हम ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। अभी मेरी आवाज़ आप सबको ठीक आ रही है आई गेस, राइट? तो बस रेडी हो जाएं, मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया न्यूज़ में। तो हमें प्री मार्केट भी थोड़ा सा, प्री न्यूज़ भी हमें थोड़ा सा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है यहाँ पर। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड स्टिल हमें अलर्ट्स वगैरह लगा लेते हैं आई गेस। यहाँ पर एक अलर्ट लगा लेते हैं इन केस हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, और फ्रेश टारगेट पर अपना हम एक अलर्ट लगा लेते हैं। दिस वुड बी आवर फ्रेश टारगेट। यहाँ पर मैं अपना 40% जो है वो क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा ताकि हमारी नो लॉस ट्रेड चलती रहे। तो गैस यहाँ पर अच्छा हमें प्री मार्केट तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लेट्स जस्ट सी के अभी होता क्या है मार्केट के अंदर। क्रूड ऑयल भी एक पोटेंशियल सेल जोन के अंदर है, लेकिन आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस वन। आई पर्सनली वांट क्रूड ऑयल टू गेट इन दिस जोन एंड देन गिव अस सम रिएक्शन, बट लेट्स जस्ट सी। These are equal highs. Yeah, equal highs in 15 minutes, so they can be really important. Let's just see। अगर हमें यहाँ पर इक्वल हाई को तोड़ने की कोई लिक्विडिटी हंट हमें देखने को मिलता है, एज एक ही कैंडल में ये ऊपर जाकर इसको वापस नीचे आ जाती है, तो बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और उसके बाद मार्केट रिवर्ट भी हो सकती है। फिलहाल के लिए हमारी यहाँ पर दो ट्रेड्स रनिंग है, क्रूड ऑयल की भी एक यहाँ पर। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसकी भी ट्रेड स्टार्ट कर ली जाए, क्योंकि अच्छा रिजेक्शन मिल सकता है इस जोन से।
क्रूड ऑयल 1 आवर पे आप देखें तो क्रूड ऑयल एक बहुत अच्छा रिएक्शन दे चुका है इस रेजिस्टेंस से जो कि मैंने मार्क की थी यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस जो है ये पीछे से मार्क हुई हुई है। लेट मी जस्ट ग्रैब इट ऑन। 1 आवर पे आई गेस मैंने ये जोन निकाला था। लेट मी जस्ट चेक अगेन। एक्चुअली मैं जोन साथ साथ बंद कर देता हूँ क्योंकि वो फिर चार्ट इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है तो कुछ समझ नहीं आ रही होती। और पर्सनली स्ट्रीम करते हुए तो आप लोगों को भी समझ आनी चाहिए, मेरी तो खैर है, बट रियली आई वांट यू गाइस टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। या हियर इट इज़। तो यहाँ पर एक जोन था जो कि पॉसिबल रेजिस्टेंस मैंने मार्क की थी इसकी। और जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आई गेस इसी जोन को टैप करके क्रूड ऑयल हमें रिजेक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स जस्ट कंफर्म कि इस जोन को टैप हो चुका है या नहीं। या गाइस यहाँ पर जोन का टैप हो चुका है, रिजेक्शन मिल चुकी है। तो हम क्रूड ऑयल को किसी भी टाइम एक बहुत ज़्यादा तेज़ बेरिश मोमेंटम में जाते हुए देख सकते हैं। आई पर्सनली थिंक कि क्रूड ऑयल यहाँ से थोड़ा सा बेरिश जाएगा और उसके बाद अपनी इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है जो यहाँ पर इसके इक्वल लोज बने हुए हैं। यहाँ पर मार्केट का पैसा बहुत फंसा हुआ है। गाइज आपको चार्ट के ऊपर देखते ही पता लग जाना चाहिए, या आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करें, डेली पे स्टार्ट करें, फिर 4 आवर पे आएँ, फिर 1 आवर पे आएँ, 15 मिनट पर आएँ, आपको नज़र आएगा कि मार्केट का पैसा किस जगह पर फंसा हुआ है और कहाँ पर आपके पॉसिबल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं। अब पर्सनली मैं अगर इसको बिल्कुल भी नहीं देखता तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये सारी की सारी यहाँ तक लिक्विडिटी ही है, ये सब मार्केट का गैप है। दिस वन स्पेसिफिकली ये मार्केट का गैप है जो कि फिल होना ही होना है। दिस वन ये पूरा का पूरा इसको लिक्विडिटी वॉइड कहा जाता है बॉयज, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पल्सिव मूव देखने को मिल सकता है हमें इसकी तरफ। और मार्केट का ज़्यादातर अभी फ़िलहाल के लिए लिक्विडिटी देखा जाए तो क्रूड ऑयल के लिए हमें डाउन मूवमेंट नज़र आएगी, बेरिश मूवमेंट नज़र आएगी। तो लेट्स जस्ट सी कि क्रूड ऑयल हमें यहाँ से इस जोन से अगर रिजेक्शन दे देता है तो इट्स रियली गुड। अगर यहाँ से नहीं भी देता तो हम टारगेट रखेंगे अपना अगला जोन जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस वाइट जोन। ऑल राइट। और जो ये रेड जोन है ये हमारी वो वाली रेजिस्टेंस है जो कि 1 आवर पे मार्क हुई हुई है। ये हमारी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जिसके बाहर अगर क्लोजिंग होगी तो हम अपने बेरिश ट्रेंड को छोड़ देंगे फ़िलहाल के लिए। हम फिर बायर्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए गोल्ड हम देख सकते हैं एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर से थोड़ा सा पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स जस्ट सी के मज़ीद कितना मोमेंटम नज़र आता है। मैं बुलिश मार्केट न्यूज़ भी देने वाली है गाइस, किसी भी टाइम हमें एक बहुत बड़ी कैंडल्स आती हुई नज़र आ सकती है। तो इस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। यू स्पीक स्पेनिश? ओला, ओ ओला, आस्ता लविस्ता। तो यहाँ पर हम किसी भी टाइम हमें बहुत बड़ी कैंडल्स भी देखने को मिल सकती हैं गोल्ड के अंदर और स्पेसिफिकली DXY के अंदर। DXY के अंदर हम देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए कोई ख़ास मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। गोल्ड के अंदर हमें अच्छी मूवमेंट नज़र आ रही है। दैट्स वाई आई पर्सनली लाइक गोल्ड। गोल्ड काफ़ी रिएक्शन देता है अपने जोन्स को और वॉल्यूम भी अच्छा रहता है गोल्ड में क्योंकि इट्स अ सेफ सिक्योरिटी फॉर एवरी वन इन द वर्ल्ड, एवरी वन अराउंड द ग्लोब ट्रस्ट गोल्ड। तो दैट्स वाई आई प्रेफर ट्रेडिंग इन गोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अभी हम इसके बाद फॉरेक्स का भी एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे यूरो की आज एक न्यूज़ आने वाली है आई गेस। ये यूरो की न्यूज़ है, नॉट रियली इम्पोर्टेंट। कैड की न्यूज़ है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो कैड के पेयर्स हम देख सकते हैं कि कैड के पेयर्स में हमें किस तरह के रिजेक्शन देखने को मिलती है। लेट्स जस्ट सी USD कैड। USD कैड को हम देख लेते हैं, इसको हम देखते हैं तो ओके USD कैड को पर्सनली दिस वाज नो, USD कार्ड फिलहाल के लिए अच्छे पॉइंट्स पर नहीं है। पर्सनली आई थिंक यहाँ पर USD कार्ड का ब्रेकडाउन हो सकता है, बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है USD कार्ड के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस पॉइंट पर तो सेल कर नहीं सकते। तो वी हैव टू वेट अंटिल इट गेट्स इनटू अ रेजिस्टेंस। हमें एक रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा कि एक रेजिस्टेंस में जाए कार्ड और वहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। आई विल जस्ट ऐड एन अलर्ट हियर and let's see what happens at this alert. क्रूड ऑयल आई गेस, क्रूड ऑयल का मोमेंटम फिलहाल के लिए स्टैटिक ही चल रहा है।
कितना टाइम गाइस, 13 मिनट्स रह गए हैं मार्केट की न्यूज़ के लिए, जो कि डॉलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीसीई आई गेस इसका फोरकास्ट जो 0.2% आई गेस, ये 0.2% का फोरकास्ट है, और अगर फोरकास्ट से बेहतर प्राइस आती है तो फंडामेंटली मार्केट बुलिश रहेगी डीएक्सवाई के लिए और बेरिश रहेगी गोल्ड के लिए। तो लेट्स सी के व्हाट हैपेंस। यहाँ पर 0.2% लास्ट मंथ हमें 0.2 देखने को मिला, उसके अलावा 0.3 0.4 रहेंगे अप्रैल और मई के। दिस मंथ वी आर एक्सपेक्टिंग 0.2%। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस फॉर यूएसडी। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हों, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो काइंडली लाइव चैट में बता दीजिएगा मुझे ड्यूरिंग द स्ट्रीम, और अगर स्ट्रीम बंद हो चुकी हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। I'll try to help you as soon as possible and as much as possible, guys. Because I personally think कि ये नॉलेज इस तरह का है कि जितना मैं स्प्रेड करूँगा उतना आपका फ़ायदा होगा, और पर्सनली मेरी भी मैच्योरिटी आएगी इन चीज़ों के अंदर। Personally, I've been working in these markets for the last 8 or 9 years, and now I'm pursuing a goal. So, goal is all right. Euro card. यूरो कार्ड की तरफ हमें कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पर। कल हम यूरो कार्ड को जैसा कि देख रहे थे कि यूरो कार्ड ने अभी तक लो नहीं बनाया, और गाइस एग्जैक्टली वही मूव्स आई। कल के एनालिसिस में 3 एनालिसिस मैंने किए थे, और एग्जैक्टली वही सब चीज़ें हुई। आई गेस ये पॉइंट था जहाँ पर हम कल देख रहे थे इसको, एग्जैक्टली ये पॉइंट था जब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता वी आर नॉट लुकिंग फॉर बायर्स, हम बायर्स को नहीं देख सकते। और देखें आप एग्जैक्टली उसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक कर पाई, मार्केट वापस नीचे आ गई। स्टिल सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा, तो हम देखते रहेंगे यहाँ पर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये रहेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये रहेगा हमारा 1 आवर के ऊपर। तो अगर हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हम मार्केट में बायस देखने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ मैंने एक जोन यहाँ पर मार्क किया हुआ है, जो कि आई गेस हम डेली के ऊपर यहाँ पर हम देख सकते हैं डेली एक सपोर्ट रहेगी। आई पर्सनली थिंक अभी फिलहाल के लिए यूरो कार्ड मजीद बेरिश मोमेंटम शो करेगा अंटिल इट्स फॉल इनटू दिस जोन, या इस जोन से हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद मे बी करेक्शन और मे बी एक बहुत बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है यूरो कार्ड के लिए। तो फिलहाल के लिए यूरो कार्ड को हम ओमिट कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा जोन काफ़ी दूर है। आई डोंट थिंक आज या 1-2 दिन के अंदर ये हमें मिल जाएगी ये वाली ट्रेड। तो हम बाकी चीज़ों के ऊपर इस टाइम फोकस करेंगे। क्रूड ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा, अभी तक क्रूड ऑयल के अंदर कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिली गाइस। तो देखते रहिए, साथ साथ रिएक्शंस देखते रहिए हर चीज़ के, ताकि आपको भी नज़र आती रही चीज़ें, और पर्सनली खुद भी देखते रहें। आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी हैं, क्रूड ऑयल की बता दी है, गोल्ड की बता दी है। तो अगर आपको कोई भी पोटेंशियल बाय या पोटेंशियल सेल आपको नज़र आ रहा हो, या आप कोई भी बायस जानना चाहते हैं किसी भी एसेट का, तो आई एम हियर। हम उसका एनालिसिस करेंगे और मैं उसके इंपॉर्टेंट जोन और इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके सो गाइस, गोल्ड के अंदर एक हैमर बना है यहाँ पर, जो कि फेक हैमर लग रहा है मुझे, क्योंकि इट्स नॉट अ रियली गुड रेजिस्टेंस जहाँ पर इसको बनाने की कोशिश की गई है। सो नेक्स्ट टारगेट वुड बी हियर, मतलब गोल्ड कैन रीच दिस पॉइंट फर्स्ट। ओके सो वी आर आउट ऑफ alerts आई गेस। या वी ऑलरेडी हैव 4 alerts running. Can I clear all of this in one click or no? Oh, it's a lot. Let's just leave it for now. इसको बाद में कर लेंगे।
आई पर्सनली थिंक कि क्रूड ऑयल के अंदर हमें ये मूव देखने को मिल सकता है, इक्वल हाइज को ब्रेक किया जाएगा और इस रेजिस्टेंस से हमें वापस मार्केट नीचे पुल डाउन होती हुई नज़र आ सकती है। गाइस मार्केट एक ऐसी चीज़ है, इससे आप जितना बचने की कोशिश करें वो कम है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्राब्स, मैनिपुलेशन ऑलमोस्ट आपको हर ट्रेड के अंदर नजर आएंगी। तो यू हैव टू बी प्लान्ड कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस साइड पर आप मार्केट के बैठे हुए हैं। लास्ट टाइम पर आप इस तरह के अगर डिसीजंस लेंगे कि यार मैं टीसीए कर लूँ और मैं ये चीज़ें कर लूँ, तो इट्स रियली गोइंग टू ब्लो अप योर अकाउंट। तो आपने अपने अकाउंट के साइज़ को बिल्कुल कंसीडर करना है। हर ट्रेड आपकी मैनेजेबल होनी चाहिए, ऐसी कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए कि एक ट्रेड का स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो तो आप अपना 20-30% ऑफ द अकाउंट लूज कर रहे हो। तो दैट्स नॉट अ रियली गुड प्लानिंग। आप कोशिश ये करें कि आपकी स्टॉप लॉसेस जो हैं वो 3 to 4% से ज़्यादा के मत हों, और टारगेट्स हमेशा 1:2, 1:3 के ट्राई किया करें एटलीस्ट। 1:1, 1:0.5, मतलब आई हैव सीन पीपल जो 1:0.5 की ट्रेड शेयर कर रहे होते हैं। पर्सनली उस तरह की आप 50 ट्रेड्स ले लें और उसके बाद आप 10 भी अगर आप लॉस में जा रहे हैं, तो ह्यूमन नेचर इस तरह की है कि आप लॉस वाली ट्रेड्स में ज़्यादा लॉस होल्ड करेंगे, एंड आफ्टर सम टाइम you'll हैव टू क्विट। जब आपको नज़र आ रहा है कि यार आई हैव लॉस्ट 50% ऑफ माई अकाउंट, तो उसके बाद आप ट्रेड्स बंद करते हुए नजर आएंगे, तो वो 50% आप लूज कर जाएंगे 10 ट्रेड्स के अंदर ही। और ऑन दी अदर साइड आप टारगेट्स जो होंगे आपके वो 20-30% होंगे उन 20-25 ट्रेड्स के, अगर आप 0.5% आर आर रख रहे हैं अपना तो। ओके गाइज, मार्केट में 5-6 मिनट रह गए हैं न्यूज़ आने में। लेट्स जस्ट सी क्या रिएक्शन देखने को मिलता है इस न्यूज़ का। 5 minutes and 33 seconds। ओके गाइज, गोल्ड में आई गेस मोमेंटम आ रहा है बुलिश। स्टिल हमें मार्केट थोड़ी साइडवेज चलती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है फिलहाल के लिए। एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पर। गाइस जब भी मार्केट में एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है तो एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है। एक्यूमुलेशन के टाइम ख्याल किया करें, एक्सपेंशन के टाइम ट्रेड लिया करें, एक्यूमुलेशन के टाइम ख्याल किया करें आप किस साइड पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई मार्केट की और उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली अप हुई गोल्ड की। तो एक्यूमुलेशन जितने बड़े टाइम फ्रेम की होगी उतना ही बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। 15 मिनट 1 मिनट की एक्यूमुलेशन पर आपको वो 1% या 0.5% का मूव देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर। और अगर आप वहीं पर 4 आवर या डेली की एक्यूमुलेशन देखेंगे तो हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट फेजेस के अंदर चलती है। एक्सपेंशन होती है, फिर एक्यूमुलेशन होती है, फिर करेक्शन होती है, फिर एक्सपेंशन होती है, एक्यूमुलेशन होती है। तो आपको हर फेज को समझना पड़ेगा। आप देखते हैं नॉर्मली एशियन सेशंस के अंदर हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिलती है और लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर एक्सपेंशन देखने को मिलती है। तो एक्सपेंशन के टाइम ट्रेड लेने की कोशिश किया करें। एक्यूमुलेशन के टाइम ट्रेड्स आपकी ज़्यादा आरआर की नहीं मिलेंगी, आपको वॉल्यूम कम होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अपनी ट्रेड्स एंट्री और एग्जिट करने में। तो इट्स बेटर कि आप वॉल्यूम में ट्रेड लें, जिस साइड पर मार्केट चल रही है उस साइड पर ट्रेड लें, बजाय इसके कि आप एक एक्यूमुलेटिंग मार्केट में इस तरह आप ट्रेड लेते हुए नज़र आएँ। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा मार्केट के अंदर। तो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड टेकिंग ट्रेड्स लाइक दिस, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो मार्केट सारी की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, एंड इफ़ यू आर स्टक ऑन द राइट साइड तो फिर तो ठीक है, बट इफ़ यू आर स्टक ऑन द रॉन्ग साइड तो आप अपना अकाउंट काफ़ी ज़्यादा रिस्क कर सकते हैं। तो इस तरह जब 2-3 हिट्स हो जाएं ऑर्डर फ्लो की, मैं हर अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज गाइज ऑब्वियसली मेरी 10 साल की सारी लर्निंग है, तो मैं 1-2 स्ट्रीम्स के अंदर या 1-2 महीने के अंदर आपको हर चीज़ें नहीं सिखा सकूंगा। इट्स अ लॉन्ग वे, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। ओके, हाउ डू आई डिलीट दिस। कि गोल्ड के अंदर गाइज हमें थोड़ी सी एक्सपेंशन देखने को मिली है बुलिश।
या एग्जैक्टली हम जैसा कि मैंने आपको मार्क किया था, नेक्स्ट टारगेट हमारा टच हो चुका है गोल्ड का। मजीद हम मजीद हमें बुलिश मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि गोल्ड कैन टच दिस आवर फर्स्ट टेक प्रॉफिट एंड देन दिस आवर सेकंड टेक प्रॉफिट। गाइस जो जो स्ट्रीम पर नया आ रहा है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज आई गारंटी यू दिस जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स और जिस तरह की टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा मार्केट में कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिकॉज आई डोंट पर्सनली थिंक कि कोई 10 साल का एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पर यूट्यूब पर बैठा टीचिंग कर रहा है। तो शेयर करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो, बाकियों का भी फ़ायदा हो, मेरी भी चैनल की भी ग्रोथ हो, मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो। तो जितना शेयर कर सकते हैं गाइस वो कम है। ओके, बोथ आवर ट्रेड्स आर शोइंग गुड मोमेंटम। क्रूड ऑयल में हमें थोड़ी सी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है अप टिल हियर, एंड गोल्ड में हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है अप टिल दिस पॉइंट। सो लेट्स सी, न्यूज़ भी आने वाली है, इट्स ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। ओके गाइस, गोल्ड में आई गेस मजीद बुलिश मूवमेंट आई है। ये गाइस गोल्ड का हम देख सकते हैं हमारा टारगेट वन ऑलमोस्ट हिट हिट होने वाला है यहाँ पर। कुछ पिप्स रह गए यहाँ पर आई गेस, या दैट वुड बी ओनली 130 पिप्स। यहाँ पर गाइस हमें मजीद बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रही है गोल्ड के अंदर, एंड ऑन द अदर साइड क्रूड ऑयल इज स्टार्टिंग टू ब्रेक। हमारे दोनों ही सेटअप्स यहाँ पर बहुत अच्छे जा रहे हैं गाइस। तो देखते रहें गाइस, यहाँ पर देखते हैं किस साइड की मूवमेंट आती है, मार्केट किस साइड को ज़्यादा मूव करती है। आई गेस न्यूज़ लॉन्च हो चुकी है। ओके, वेयर इज इट, वेयर इज इट। 0.1% डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज़ आई है, तो हम गोल्ड के अंदर बुलिश मोमेंटम बिल्कुल देख सकते हैं गाइस। लेट्स सी कि मार्केट मैनिपुलेशन होती है न्यूज़ की या नहीं। मे बी इट्स अ मैनिपुलेशन राइट नाउ। मार्केट हमें नीचे आती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी हमें मार्केट वापस ऊपर ब्रेक करती हुई नज़र आती है या नहीं। फॉर नाउ फंडामेंटली वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। न्यूज़ नेगेटिव आई है गोल्ड के लिए, सॉरी डॉलर के लिए। सो गोल्ड के अंदर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल एनालिसिस। कमिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस जो कि कल मार्क की थी उसके अंदर ही हैं, तो हमें यहाँ पर वापस ब्रेक डाउन भी देखने को मिल सकता है, वापस मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो गाइज हमें दोनों चीज़ें, दोनों सिनेरियोज को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम एक साइड पर ही सोचते रहेंगे और हम अगर गलत सोच रहे हैं तो फिर हम हमेशा उसी साइड पर डीसीए करते रह जाएंगे।
तो इस बेरिश मूवमेंट गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिल रही है। लेट्स सी कि क्या हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है या नहीं। ओके गाइस, दोबारा से एक सपोर्ट का रीटेस्ट हो चुका है, ये वाला लो भी एक दफ़ा फ्लश हो चुका है, तो हमें इफ़ गोल्ड वांट्स टू गो अप नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम। ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट आई पर्सनली थिंक इफ़ गोल्ड वांट्स टू गो अप, अगर गोल्ड ने यहाँ से बुलिश मूवमेंट दिखानी है तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर द एंट्री, लाइक दिस कैंडल, yeah, बिकॉज दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कैंडल। ये स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं यहाँ पर, और सेकेंडली हमारे यहाँ पर एक अच्छा रिजेक्शन भी मिला है इस सपोर्ट से। लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस गाइस। ऑन दी अदर साइड क्रूड ऑयल के अंदर हमें कोई खास मूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिली गाइस, तो क्रूड ऑयल इज गोइंग साइडवेज फॉर नाउ। गाइस अब किसी भी टाइम हमें मार्केट एक साइड पर जाती हुई नजर आ सकती है। If it goes bullish, so we'll be in good profits. And but if our stop loss hits, so it's no problem. Stop losses and losses are part of this journey. You have to understand that. ऑब्वियसली आप कभी भी 10 में से 10 ट्रेड सक्सेसफुल आपकी नहीं जाएंगी, बट इफ़ यू आर गोइंग एट गुड आर, अगर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखेंगे, तो अगर आपकी 10 में से 4 ट्रेड्स भी सक्सेसफुल होती हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में होते हैं। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट इज गाइज। आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, लॉस मैनेज करना है कि लॉस आप कम से कम करवाएं और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बुक करें। दिस वे यू कैन कंपाउंड योर अकाउंट। आप अपना अकाउंट इस तरह ग्रो कर सकते हैं। छोटे टारगेट्स के चक्कर में मत जाएं, अपनी सिर्फ अपनी पॉकेट मनी निकालने के चक्कर में मत जाएं। कंपाउंड करें अपने अकाउंट को एज मच एज पॉसिबल। ग्रो करें इस मार्केट के अंदर, बिकॉज दिस इज द लॉन्ग लास्टिंग थिंग। ये पूरी जिंदगी चलती रहेगी, जब तक हम जिंदा हैं, वी आर हेयर, द मार्केट इज हेयर। हम हमेशा ट्रेड कर सकते हैं इन मार्केट्स के अंदर। तो अच्छे जोन्स को ट्रेड करने की ट्राई किया करें, अच्छी ट्रेड्स लेने की ट्राई किया करें। सो या गाइस, हमें एग्जैक्टली उस पॉइंट से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। Let's see if it breaks this one. ओके गाइस, हम अपनी प्रीवियस हाई के करीब पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है हमें इस पॉइंट से, अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वॉल्यूम बुलिश नहीं आता तो थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है हमें दोबारा इस कैंडल तक में भी। So yeah guys, we are going up for now. We are still in the trade. Let's see how much time does it take to break this zone.
गाइस मुझे एक क्रूड ऑयल पर यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर एक क्रिएट हुई थी, और लेट्स सी क्या हम इस जगह तक ब्रेक कर सकते हैं क्रूड ऑयल को। गोल्ड स्टिल गोइंग बुलिश 1871.3 something. Crude oil needs to come down now. We're almost reaching our previous swing high on the 1 minute. अगर हमें ये ब्रेक देखने को मिलता है तो our next target can be here. I personally think we can see this break, and this can be our target 1879. Guys, एक और बड़ी न्यूज़ भी आज हमें देखने को मिलेगी। दैट वुड बी एट 7 p.m. ऑन माई टाइम जोन आफ्टर 1 hour and 20 minutes। तो उस टाइम भी हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है मार्केट में। फॉर नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट। A very good hammer in gold. Maybe we can see the breakdown of this zone in 1 to 2 candles. Yeah, maybe this one would be big. Yeah, this one could be a big candle. Yeah, it's going really good. Guys, this would be our first target, this one. This zone would be our first target. Our first target is about to get hit, guys.
Let's go. इस 15 मिनट पर मुझे यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रही है, तो आई पर्सनली थिंक आई शुड टेक सम partials here. So I'll take some partials here, and then let's try to move to the next zone. Yeah, रिजेक्शन देखने को मिली हमें इस जोन से. आई हैव ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस, तो अब हमारा स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पर रहेगा. नो लॉस ट्रेड रहेगी यहाँ पर. तो this target, I personally think if it hits here, the next target would be here. So personally, I'm not targeting this zone right now, and I'll go for this one. It comes down, I might take a re-entry if it comes down. Secondly guys, क्रूड ऑयल के अंदर भी हमें थोड़ा सा ब्रेकिंग पॉइंट नज़र आ रहा है. लेट्स जस्ट सी. या क्रूड ऑयल थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक हुआ है, बट स्टिल सेकेंडरी स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ. तो वी आर नॉट confirm about this trade yet. We personally want this thing to go. गाइस यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा. तो if it comes down until here, I might take another entry on gold. This one, yeah. I'm just deleting this thing for now because you already know what's our targets are. आज डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज़ आई है, तो हमें यूएसटी वाले सब सब पेयर्स के अंदर थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम नज़र आया होगा. जीबीपी यूएसटी आई गेस थोड़ा ब्रेक हुआ होगा. या एग्जैक्टली थोड़ा ब्रेक हुआ, दोबारा से वहाँ पर आ गया. सो not a good point for GBP USD to trade in. AUD USD, Australian dollar against US dollar, not really at a good point. These are equal highs, these, so we want these to get
stooped and fall into this zone, and then we can take sells here. Gold is still static for now. Okay, now we can see gold railing up maybe. Okay, guys, here we go. Our first targets have been hit. This was our first target, last high, and the next target is here. Remember, just below this zone, somewhere around 1879. Yeah, let's just mark it for now. This would be our final target for this trade. गाइस क्रूड ऑयल में बहुत एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है हमें आखिरी 1 आवर से कॉन्स्टेंटली इसी जोन में यहाँ पर क्रूड ऑयल देखने को मिल रहा है। तो किसी भी टाइम एक बहुत बड़ा जोन देखने का, बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है हमें क्रूड ऑयल में। ये दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन गाइस। तो एक्यूमुलेशन के बाद ऑलरेडी ऑलवेज एक्सपेक्ट अ बिग मूव। This is our accumulation zone. So let's just see what happens. Gold I guess break कर चुका है. It's still breaking down. Our first targets have been hit, guys. As you see, as I marked, the first target was the high, the previous high on 1 minute, yeah? Or you can just say 1 hour or 1 15 minute, wherever you find it. So I marked it on 1 minute. So you see our first target has been hit and we just secured how much RR. Let's just check. This was our entry. This was our stop loss. Oh, sorry. This was the entry. This was the stop loss just below this. And this was the target. So guys, it's a 3.48, almost 3.5. Yeah, 1:3.5. It's a pretty good trade. So we just secured 3.48 RR. इस क्रूड ऑयल के अंदर हमें किसी भी टाइम एक्सपेंशन फेज देखने को मिल सकता है। काफ़ी देर से यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है, तो वी कैन सी एक्सपेंशन नाउ।
गाइस इक्वल हाइज यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं, तो हमें मार्केट बहुत जल्द यहाँ से वापस आती हुई नज़र आएगी। पर्सनली जब इक्वल हाइज बनते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग मार्केट रिवर्ट होती हुई नज़र आती है थोड़ी सी, बिकॉज लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हो चुकी है थोड़ी सी। दिस इज़ नॉट परफेक्टली एन इक्वल हाई बाय द वे, दिस इज़ द फर्स्ट हाई। ना, इट्स नॉट इक्वली इक्वल हाई, सो वी कैन नॉट मार्क इट एज एन इक्वल हाई। हमें स्टिल यहाँ पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है गोल्ड में। The next news is after 1 hour, guys. It's only 1 hour left until the next news. We have secured one trade up till now. This one, yeah. So let's see if we can get another one. Guys, हमेशा प्रेफर करें कि आप अच्छी ट्रेड्स लें। ओवर ट्रेडिंग अपनी आदत मत बनाएं कि हर ट्रेड हर चीज़ जो नज़र आ रही है वो वैसी होती नहीं है। तो बेसिकली अच्छी ट्रेड लेने की ट्राई करें, अच्छे पॉइंट्स पर ट्रेड लें। हर जगह पर ट्रेड लेंगे तो आप स्टक हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ जो कि आपको ये बता सकूँ कि मार्केट किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी। आई एम जस्ट अ ट्रेडर, आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट। सो बेसिकली व्हाट आई कैन टेल यू इज़, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर मार्केट फंसा हुआ है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। हमेशा इसको एजुकेशनल पर्पस के तौर पर इस चैनल को रखें, सीखें इन चीज़ों से, ताकि आपका अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को नज़र आए आपको। इस गोल्ड की हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है यहाँ पर पर्सनली, आई थिंक, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है इस जोन को ब्रेक करने में। ऑन द अदर हैंड, क्रूड ऑयल इज स्टिल इन द accumulation zone. I personally think that we can expand up till here, break these equal highs, and then come back and make a new low for crude oil. Let's just mark everything. So this is the zone I'm trying to target here. This one, the one in, let's just change the color. It's easier for you to see. Yeah, this pink zone, guys, this is the probable selling point for crude oil. Okay, guys, क्रूड ऑयल एक्सपेंशन से स्टिल थोड़ा सा हमें ब्रेक डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टिल एक्सपेंशन फेज अभी दूर रहेगा, एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही है स्टिल। अगर हमें यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है तो हम अपना एंट्री पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन चाहिए जो कि यहाँ तक रहेगा।
if it breaks this one, we can start selling at this point. हमेशा अपनी एंट्री को बेहतर से बेहतर करने की ट्राई कीजिएगा। ऐसा मत हो कि एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट ब्रेक हुई है या एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो आप उसी टाइम एंट्री ले लें। 1 मिनट पर उसको रीटेस्ट होने का वेट किया करें ताकि आपकी एंट्री बेहतर से बेहतर हो। इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपका प्लान वर्क नहीं करता, तो आपको कम से कम लॉस हो। ऑलवेज फोकस ऑन गेटिंग एज लो लॉस एज पॉसिबल। ओके गाइज, यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है क्रूड ऑयल में। या गाइज, यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो अब हम क्रूड ऑयल में एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग की। लेट्स वेट फॉर द रीटेस्ट फर्स्ट एंड लेट्स जस्ट सी कहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। Do we have any zones? Nothing here. Still nothing here. There's no order block for now. There's no good order block. This one is a big one though. This one. So if it retests again here, we can start selling. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है गाइस 1 मिनट के ऊपर क्रूड ऑयल का। बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। ऑन द अदर हैंड गाइस, गोल्ड हमारा टारगेट 1 क्रॉस कर चुका है एक बहुत अच्छी मूवमेंट के साथ। नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1879। स्टिल गोइंग अप, स्टिल गोइंग अप। क्रूड ऑयल एज सस्पेक्टेड गोइंग डाउन। बहुत बड़ी मूव क्रूड ऑयल के अंदर गाइस, बहुत बड़ी मूव देखने को मिल रही है यहाँ पर। एज आई टोल्ड यू गाइस, सेकेंडरी देखिए, स्ट्रक्चर्स मार्क करना इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अंटिल इट इज ब्रोकन वी कांट ट्रेड इन एनी डायरेक्शन। ये एक्यूमुलेशन फेज था, फिलहाल के लिए हमें ट्रेड नहीं मिल सकी यहाँ पर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंड। यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक्यूमुलेशन नजर आई, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिला क्रूड ऑयल के अंदर। तो अब हम देख सकते हैं गाइस, किसी भी टाइम क्रूड ऑयल यहाँ पर वापस रीटेस्ट के लिए अगर आता है तो हम सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। इफ इट डजंट कम तो आई पर्सनली डोंट प्रेफर टेकिंग एनी ट्रेड लाइक दिस। किसी भी ट्रेड को इस तरह मत लें, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेल डाउन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ तो मैं अपने टारगेट्स भी कम करूँगा और अपना स्टॉप लॉस मज़ीद वाइड करूँगा। तो वी डोंट वांट द वाइड स्टॉप लॉसेस, वी वांट एज लो स्टॉप लॉस एज पॉसिबल। ये guys, it's coming up in our preferable zone. Gold is gold, yeah, gold has broken this high very cleanly. It's a clean breakout, honestly. Yeah, this one's a clean breakout. Now we can target this zone for selling a gold, and for crude oil, I personally want it to come back so we get an entry in selling. This would be our entry, this would be our stop loss, and our target would be here. It's a 1:5 trade, guys. 1:5. Let's see if it's possible. Let's see if we get the entry.
I'll just add an alert ताकि ये एंट्री मिस ना हो हमारी. I'll add an alert here. If it's break this one, I'll get notified. Guys, orders, limit orders पर जितना कम ट्रेड करेंगे it's better. Always try to be live on the market when you are trading. ऑर्डर्स पर ट्रेड करना, रात को ट्रेड लगा के सो जाना, लिमिट ऑर्डर्स लगा कर सो जाना, these are not good practices. If you are not an experienced trader, you shouldn't do this because you don't know how the market would react. Sometimes it works, sometimes it doesn't, but you have to make sure you're understanding what's happening in the market. Keep going up, please. Crude oil just come into this zone and then break down. Gold is going up still, accumulating for the last 5 minutes. It'll probably go up until here. And we still, if you still want to see how we can buy gold at this point, then this is a good buy zone for gold. This one. And the targets again would be this one. Another 1 ratio 5.5 trade. So this can be a good trade as well. Crude oil is coming up again. Might come into the zone again and break down again. This time we can see a really big move, honestly, because expansion phase might have just started. अभी तक गाइज इस चैनल के ऊपर 3 सेटअप शो किए गए हैं एंड लकीली एंड फॉर्चुनेटली एंड एक्सपर्टली एवरीथिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल अप टिल नाउ. आई होप इसी तरह हमारी जर्नी चलती रहे, आप लोग सीखें कि मैं क्या चीज़ें मार्केट में नोट करता हूँ बिफोर टेकिंग अ ट्रेड, वाइल टेकिंग अ ट्रेड मैं क्या चीज़ें नोट करता हूँ, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करें, अपने सेटअप्स को इम्प्रूव करें, जस्ट ग्रो. All about this is all about growing. The crude oil is going down again. Okay, so इस पॉइंट पर हमें थोड़ा सा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमारे एंट्री पॉइंट तक. सो लेट्स सी कितना बेरिश मोमेंटम रहेगा यहाँ पर, क्या हमें यहाँ पर मज़ीद ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा. अगर मज़ीद ब्रेकडाउन होता है तो हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी बिकॉज आई पर्सनली वांट दिस एंट्री. मैं मज़ीद दरमियान में एंट्री लेना प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ पर. Gold is still going up. Yeah, it is. Let's see how much did DXY break. DXY पर अभी तक हमें रिजेक्शन
कुछ खास देखने को नहीं मिली न्यूज़ की वजह से, because you see it's still accumulating in this zone and the secondary structure but has been broken. So it can come into this zone, this one, and this can be our good selling point. This one. Let's just remove this one. So this can be our selling point for DXY if you're trading in DXY. Gold still going up, still going up. Our final target is almost here, guys. Almost here. And then we will check how much did we secure. This was our entry, and this is our final target. Okay, so let's just make it precise. 1:6.5, guys. Normally आप इतने आरआर की ट्रेड्स देखने के आई डोंट थिंक आपको आदत होगी, बट ऑन दिस चैनल यूल से ट्रेड्स लाइक दिस, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, बड़ा टारगेट होगा, एंड विल ट्राई टू मेक दीज सक्सेसफुल depending upon the market conditions. Yeah, crude oil is coming down really fast, honestly. Oh my god. No entry in crude oil, honestly. We have missed the entry. Now I don't want to trade here. गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पर एंट्री ली होगी. may obviously they will be in profits right now, but we always want the good entries. हमें दरमियान में एंट्री नहीं लेनी किसी भी ट्रेड के, किसी भी बड़ी कैंडल पर एंट्री नहीं लेनी. हमेशा एक्यूमुलेशन जोन और एक्सपेंशन जोन के दरमियान में ट्रेड लेनी है कि हम एक्सपेंशन को या तो कैच कर सकें या एक्सपेंशन होने के बाद रीटेस्ट को कैच कर सकें. लाइक पर्सनली जब मैंने ट्रेड स्टार्ट की थी तो आई मार्क दिस जोन, जिससे हमें फ़िलहाल के लिए ब्रेक डाउन देखने को मिला है. दिस जोन, ये इट वाज एग्जैक्टली दिस वन. 5 मिनट पे गेस था वो. Yeah, this one, this candle. The reason I am marking this one, guys, is because this is what I see in the market. Market had a lot of money stuck here, so that's what I was targeting here. यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ था, लिक्विडिटी यहाँ पर फंसी हुई थी. दैट्स व्हाई आई वाज टारगेटिंग दिस जोन एंड यू सी अ बिग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन. I personally did not take this trade because I was looking for better market conditions. There was a news coming down. There were equal highs just above this trade. So I personally don't want to trade in these conditions. Gold is still going up, guys. About to reach the target. A few pips left, honestly. Just a few pips left. And when it falls into this zone, we can start looking for sells into this zone. Hello, Popat Plays, how are you? ओके गाइस, यहाँ पर हमारा 1:6.5 सिक्योर होने वाला है ऑलमोस्ट. अगर हमें यहाँ पर कोई बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है तो आई विल क्लोज द ट्रेड, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग फाइन.
really fine. Let's go guys. यहाँ पर हमारा next target भी almost complete होने वाला है. Just one more candle to the upside. स्टिल कोई बड़ी रिजेक्शन देखने को नहीं मिली हमें. Okay guys, I think our target is about to get hit in some moments. How are you? I am good. How are you? Let's go, guys. 1 ratio 6.5 secured. Our target has been hit. Congratulations. Just look at this beautiful trade. We took the entry here. This was our stop loss. Just look at how it touched the zone here, and our entry got hit, and then we secured 1 ratio 6.42. We are out of this trade now. Now we will look for sells because it's a really big rejection on this zone. I personally think we can really see a big rejection from this zone because you remember, let me just show you. This was our 1 hour one daily support, yeah. This was our daily support for the previous swing. Gold broke it and now it's going for retest, and now we can start looking for sells because this is the big sell zone here. And crude oil is not coming up for now. No, I want it here. Okay guys, we can see a big rejection. Our entry just got hit. So now we can start looking for sells. For sells, we will need some secondary structure to be broken. For now, this is our secondary structure. We will see if we get a better secondary structure. For now, this is the one. And there's a news coming up again, guys, in 20, 30, 40 minutes. So always remember that. Nasdaq is still in accumulation after a good expansion. There was a good expansion in Nasdaq. You see how important these zones are. It tapped this zone, took this liquidity, and then rallied to the upside. Still coming down, crude oil. So guys, this is how important is that you are on the right side of the market. आप हमेशा कोशिश करें कि आप मार्केट की हमेशा राइट साइड पर रहें ताकि आपके स्टॉप लॉस सेट हों तो बिल्कुल छोटे हों और आपके टारगेट्स जो हैं वो बहुत बड़े हों कंसीडरिंग द स्टॉप लॉस. 1:3 1:4 टारगेट करने की ट्राई करें एटलीस्ट. अगर इससे बेहतर मिल जाए तो क्या ही बात है. Let's focus on gold for now.
बिकॉज गोल्ड ने हमारा एंट्री पॉइंट टच कर दिया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर गोल्ड का यहाँ पर रहेगा, इस पॉइंट पर रहेगा, नॉट दिस वन। आई थिंक अगर इसको ब्रेक करता है तो वी कैन स्टार्ट सेलिंग। Okay, there's a good rejection for gold now. Yeah, that's a good rejection. Guys, just look at this. हमारे टारगेट्स कितने प्रिसाइज होते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को फोकस करने की ट्राई करें। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर था, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस मिली ब्रेक करने में। एंड द नेक्स्ट टारगेट हमारा कितना स्मूथली ऑब्टेन किया हमने गोल्ड के अंदर, और उसके बाद कितनी क्लीन रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है फिलहाल। Let's see how if we can break this secondary structure here. This one is a secondary structure. So if we break this, we can start looking for sells at this point. This would be my entry point in this trade if it breaks a secondary structure first. This would be my entry point, and this would be my stop loss just above this. If it breaks a secondary structure first, we have to wait for it to break the secondary structure. And honestly, I think the targets are going to be really big for this one. Let's just mark it for now. We have already secured 1:6.5 today. Guys, जो stream पर नया आया है, chat में introduce yourself, tell me who you are, how you are interested in trading. Trading में आपको क्या बेहतर लगता है, कहाँ पर मसले आते हैं, and I hope I can resolve all of your issues. I'll delete this one for now. We are starting to break the secondary structure, guys. And this would be our entry, this would be our stop loss, and the targets are really big for this one. Honestly, I think these can be the targets. Now, just 1 second. Yeah, this one would be our good target. 1:6 again. Still the secondary structure hasn't been broken, so no trade for now. Just wait for the secondary structure to get broken. This is a secondary structure. If it breaks it, I'll get the entry here at this point. Okay, crude oil has gone really bad, honestly. About to hit our targets. I did not take this trade. I missed this trade, honestly, because the moment it broke down from here, it did not retest until the zone I was interested in, and then it started coming down. So I think we have missed this trade. There's a less chance for it to go back up till here. Yeah, this was the trade. Gold coming back up, secondary structure not been broken yet, so no entry for now. I'm not gonna enter now. I'll wait for the secondary structure.
Another news coming in 25 minutes, guys. 35 minutes, actually. Another news coming. Crude oil still coming down, still coming down. It's probably gonna break this zone as well. The next target can be here on this support. Let's just mark it. These equal highs, yeah? Remember. Let's just delete everything here. This is this is not a good zone actually. On 4 hour, yeah, this one is a good one. So crude oil can reach here, and then we can see if we can find any buys from here. Gold had a rejection again, I guess. Okay, guys, gold is starting to break the secondary structure. Hasn't broken yet. This white line is the secondary structure. If it breaks it, then I'll get the entry here. And a really small stop loss, yeah? 1877 to 1880. All right. Hasn't broken yet. Starting to break. Okay, equal low in place. Breaking. Is it a clean breakout or what? Yeah, guys, it's a clean breakout. So now we can look for sells in gold. अब guys हम gold में selling की तरफ जाएंगे. Let's see what happens. सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को हमारा टैप हो चुका है, तो वी कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर सेल्स इन गोल्ड. आई पर्सनली टारगेट दिस जोन, द वन आई हैव मार्क्ड, द पिंक वन. So if gold touches here, I'll start selling. And the targets I've already shown you. These are the big targets breaking this zone. Or maybe this one. These are pretty big targets, honestly. Honestly, I think it's gonna this should be our first target. This one. Because it has the potential to come down up till here. So guys, secondary structure break हो चुका है यहाँ पर. Let's see what happens. I'll remove all of these zones because we don't need them anymore. Crude oil थोड़ा सा यहाँ पर support लेता हुआ नजर आ रहा है. There's still a minor chance that it comes back here and gives us the entry, but that's a really minor chance. And on the other side, we see gold breaking, breaking, and still breaking.
Heavy, sir. Very helpful. Thank you so much, Warlord. Okay. Can we see a bullish engulfing candle here? If we see one, there's a lot of chance we'll get this entry. Nah, not a bullish engulfing. Big news coming in 30 minutes again, guys. Gold still breaking, guys. Okay, guys. यहाँ पर गोल्ड स्टिल थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है अपने पिछले स्विंग लो पे. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है. आई पर्सनली वांट I personally want gold to come into this zone and then we can start looking for sells. I hope we don't miss the entry. Guys, it's really okay. Don't FOMO, yeah? Some of the people FOMO like this. That obviously, if we had took this trade in crude oil, we have secured a lot of profit. But I'm not comfortable in taking entries like here. Because if I get stopped out, then all of this is my loss. All of this. You see, this was our stop loss. Yeah, you remember. This is a lot of money, guys. Okay, a USD card. What did USD card do? Oh my god, USD card has shown some really big move. Okay, USD card is coming up. Can we look for something? Not exactly right now. All of this is taken, honestly. This is the only zone I can start looking for sells in right now. Secondary structure broken. Coming up until here maybe. And then we can start looking for sells. I'll leave it for now.
focus on gold right now. Gold and crude oil. As you can see, guys, crude oil targets as I marked, it has been hit. One ratios 5.61, but I did not take this trade personally because I wasn't comfortable in getting the entry here. And at this time I had an entry, but I closed it because there was a news coming up. यहाँ पर मेरी एक entry थी, but I closed that trade because एक news आने वाली थी and I wasn't really sure what would happen. So I like to trade with my comfort level, yeah. If I'm not comfortable, I do not take the trade because there's a lot of chances you will get. Market will give you a lot of opportunities, but at the same time market will manipulate you a lot. So you have to focusing on the opportunities and getting rid of the manipulations, just avoiding the manipulations to grow your account. Yeah, just focus on these things. Okay, so there was a big move in crude oil, honestly. That was a really big trade. Alas, we missed that. It's fine. I hope we will get this gold trade. Just a moment, guys. Okay, yeah, so gold has successfully broken the primary structure as well. I really hope it comes back into this zone and we can start looking for sells. Just one moment, yeah. Okay, gold is coming down again. Okay, gold has started to break down a lot, guys. Now I guess we have to find a better zone for the entry. If it breaks down up till here, then this could be our zone. This one. Crude oil on the other side has broken a lot. Targets achieved. 4 setups, guys. I have uploaded 4 setups on this channel up till now. We just witnessed everyone to be successful and to be not to be precise, but approximately we have secured 20 RR because 2 of them were 1:6, 1:5, and 2 of them were 1:4 something. So
Probably 18 RR. It's a really good start, honestly. This is our interested zone right now. I still think it can come up till here. If we get entry like here, it would be a clean entry and our targets would be really big. You see 1 ratio 6.29. अस्सलाम वालेकुम अहमद अरबाज, क्या हाल चाल है? Crude oil is still breaking down, guys. Lot of bearish movement in crude oil. You see, it's going to break this zone for sure. It might retest a bit. Let's see if we have a good zone for sell. Yeah, this is a good zone if we get this one. It's not really a comfortable zone for me because my zone was here and I don't think it can touch here again. I personally think that it can touch here and then start breaking again. Let's just try to break it down in 1 minute. Yeah, this one. This one can be a good one. Okay, it hasn't been tapped. So yeah. This one has been tapped. Yeah. So yeah, if crude oil comes here, we can start selling. On the other side, gold is coming up again. Might come into our entry point. Sir, fine. Really following your tips. They are amazing. Thank you so much, Ahmed Arbaz. I am Saad. You, Saad, how are you? I am in profit these days. Very good, very good. Keep up the good work, Ahmed Arbaz. Full form of INF. Where is INF? INF means infamous. Just look at this candle, guys. Just look at this one. It took like 5 and 7, 11 hours of accumulation, 3, 4 hours of expansion, and only 1 hour of the bearish momentum to come up till here. So this is how important the supply zones, the order blocks, the order flow, the market structure is. You have to focus on everything I say. You don't understand anything, you type it in the comment in the live chat and I'll try to tell you as soon and as much as possible. Obviously, it's the learning of my last 7 or 8 years, so it's gonna take some time for you to grab everything. But still, you can start anytime now. Just start the good work, start investing in financial markets, be independent, be a good trader, be a genius trader.
Gold is still breaking down, not giving us the entry, honestly. Two of our trades are missed because of the limit orders. I did not want to put limit orders. I normally do at these times, but today there were news coming up, so I did not put any limit orders. But normally in these times in New York and London session, I do trade in limit orders. So that was the block I marked. So I would have put a limit here and the stop loss here. And for the crude oil, I would have put a limit order here and a stop loss on this zone. So we have got like we would have got both of the trades, but for now it's all good. We still got one trade in gold, and that was a really big one, starting from here and going to here. And now we are selling back. News coming down in 15 minutes, guys. I'm gonna stream for like 30 more minutes. We'll see how the news react, how markets react to the news, and then I'll stop streaming. And because there's no volume after after the New York session, you know that. So it's it's not really necessary to sit in the markets, analyze everything after 9. You can still do your high time frame analysis for the potential zones for buys and sell, but for scalping, I do not recommend it after 9 p.m. after the New York, London session and New York session. क्या हुआ वॉरलॉर्ड? JPY had a good rejection, not a really good zone, honestly. Can go up again from this point, from these equal highs, equal lows, sorry. Can take these lows and go up again. Frank, yeah, it can also go up. A lot of potential, the bullish potential. And USD CHF is already going up in good momentum. I think DXY is already going up. Yeah, you see, DXY showed a good momentum. So, yeah, this would be our sell zone for DXY. Yeah, this is a perfect one. Honestly, guys, this is a really clean zone. Let's see how we react into the zone. But one problem here is it tapped this support zone, I guess. Yeah, that's the problem. So we're gonna omit this one. Always remember, guys, don't focus on everything like on one side of the market. Like you just saw, I marked a resistance. I was trying to see if I could sell from this trade, but then I just saw that it really tapped a really good support. So we don't have to sell at the first resistance we are getting. We'll try to get the sells at the premium entries, and the premium entries, we don't see any clean one here. This one is already tapped, this one is already tapped, this one is not tapped. So the one I mark here, this one, but I do not suggest this trade. आपको उर्दू भी आती है? Yes, उर्दू भी आती है. Gold is still coming down. What the heck? Crude oil almost breaking this zone. As I told you, all of this is going to break because this resistance was a really big one. This was a really big resistance. A new low has been made for crude oil, and for buys, we can look into these areas. After it has swept these equal lows, we can start looking for buys.
This is a good zone, honestly. I'll see how markets react to this. Assalamu alaikum, Nida, how are you? Warlord professional trader. Yes, very, very professional trader. So yeah, guys, we secured gold 1 ratio 6.5. We took a good setup on crude oil, but I missed the trade because of the market news. But it's okay. Sometimes these things happen. कभी कभी अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है बट यू कांट जस्ट ग्रैब इट. कैसे हो टीपू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. आप सुनाएं कैसी हैं? Gold still breaking down, guys. I think we have missed this entry. How cleanly it tapped this zone and came back. That was so clean. No retest up till now. This one should have been a retest. Was it? Let's just be precise. No, it wasn't a clean retest. That was the issue. I couldn't trade this. Okay, I'll delete this zone for now. Alhamdulillah, ठीक माशाअल्लाह. सुनाएं क्या चल रहा है? Big news coming in 8 minutes, guys. Only 8 minutes for the big news. The forecast would be 67.7. So if it's above the forecast, we can see more bearish movement in gold. Remember, gold can still break down, guys. It can go really down. कुछ आम ही सुना दो यार, कुछ खास नहीं है तो. Okay, guys, this is a good buy zone that we just stopped. It can work for the retest. And news is also coming up, so let's just mark some things. Let's mark this zone. Yeah. Okay. This would be our selling point. Yeah, bullish hammer is coming up, guys. We can see a bullish momentum from here. If we tap this zone, I'm gonna take a sell, guys. लॉबी आना, बहुत कुछ सुनाऊंगी. जरूर जरूर. There's clean rejection from this support. That's a clean rejection. We might get here and then all the way down here, breaking this zone as well. So my predicted movement would be from here to here and then coming back down here. Let's see what happens. Okay, guys, yeah, it's coming up. Get ready. We might see a good setup here.
YT stream shots, how are you? कैसे हैं आप? Crude oil is also getting some support, I guess. No, it's still accumulating. No point in trading crude oil right now, but gold can see a good potential. 5 minutes to the news, guys. 5 minutes. 4 minutes, 18 seconds. Yeah, DXY is almost in the resistance. So अगर DXY यहाँ से नीचे जाता है तो गोल्ड यहाँ से ऊपर जा सकता है. बट DXY रिसेंटली अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक, प्राइमरी स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है एक्चुअली. तो DXY कैन रियली फॉल a lot, like very very much. All of these zones have been tapped. This one, this one, this one, this one. Only this one hasn't been tapped. So maybe this is the point where DXY falls, gold goes up, and then after that, gold comes down. Walaikum assalam, Fahad Hassan, how are you? Yeah, big news coming down, guys, in 3 minutes. यार फहद, मैं तो 6-7 साल से इस लाइन में हूँ. ये चैनल बस कल ही स्टार्ट की है. हमें तो अरसा ही हो गया यार इस फील्ड में. अगेन रिजेक्शन, गाइस. News coming in 2 minutes. 1 minute 56 seconds. Best of luck. Thank you. I think it's gonna take the liquidity from here as well. It's going to break down the zone. Let's see if it's a clean breakdown or what. I'm interested in selling at this point, at this one. News coming. 31 seconds, guys.
Yeah, broke the zone. Not a clean. Would it break again, guys? Let's see. सुनाता हूँ गाने भी सुनाता हूँ तुम्हें, सबर करो. Yeah, guys. So this zone has been broken. Wasn't a clean rejection as well. But now we can see some bullish momentum and then gold might come back because the news is coming up. Okay, what's the news? Pending, pending, pending. Where the heck is gold? Okay, I think the news has been launched. No, still pending. Still uploading. Yeah, it's out. A positive news for dollar as I expected, guys, and gold is going to go down as well. So everything is in our favor. बस अब हमें ये चाहिए कि हमें एक गोल्ड अच्छी एंट्री दे दे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एंट्री लेना इज नॉट अ गुड डिसीजन. We just want gold to go back up here and then we can start selling gold. The market is in our favor. Please go up. Please go up till here. I think I can just put a limit here now because I think I'm gonna miss the entry up if I keep watching like this. What's this point? 1874 on 1 minute. Yeah. Coming down to the next zone, guys. Very fast. A very fast reaction. DXY would be really positive news for gold. Oh, sorry, a negative one for gold and a positive for dollar. I'm gonna delete this one. This one as well. Let's make the chart a bit clean. What's this one? 1864, 67. Yeah, this one is it. Yeah. Okay, yeah, we have fell into the zone almost. Gold can really back up from here. Good point.
taking the liquidity to the downside. Breaking really hard, guys. Now we have took this liquidity, fallen into this support again. So a perfect time for the correction if it's not a really big rejection. Because sometimes क्या होता है guys, जब भी आप मार्केट में करेक्शन पे ट्रेड कर रहे होते हैं, बिकॉज करेक्शन पर ट्रेड करना इज अ गुड स्ट्रैटेजी. समटाइम्स व्हेन समथिंग इज रियली ओवरसोल्ड तो आप उसको बाय कर सकते हो. जब समथिंग इज वेरी लाइक ओवरबॉट आप उसको सेल कर सकते हो. बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके स्टॉप लॉस जो हैं वो बहुत छोटे हों. उन ट्रेड्स में आपने स्टक नहीं होना. बिकॉज देखो यहाँ पर हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकती है इस जोन से, लेकिन जितनी तेज़ ये मोमेंटम है देखें, इतना सा हमारा स्टॉप लॉस होता. मतलब अगर आप यहाँ पर करेक्शन ट्रेड कर रहे होते तो सिर्फ ये स्टॉप लॉस होता आपका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था अकाउंट के ऊपर. तो ऐसे टाइम्स पर बस स्टॉप लॉस आपने जितना छोटा रख सकते हैं उतना छोटा स्टॉप लॉस रखना है. हाँ सबर सबर, 5-7 मिनट रुको. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ. आज के हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे सेटअप्स ही वर्किंग थे. 4 सेटअप्स हमारे सक्सेसफुल गए हैं. यहाँ पर 2 हमें ट्रेड्स नहीं मिल सकी बिकॉज ऑफ न्यूज़. मैंने लिमिट्स पर ट्रेड करना पसंद नहीं किया उस टाइम पर. बट इट्स फाइन, इट वाज अ रियली गुड डे एंड होप टू सी यू गाइस ऑन मंडे. गाइस जस्ट मेक श्योर आप ये चैनल अपने सब दोस्तों से शेयर करें बिकॉज ऑब्वियसली एवरी वन इन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स टू अर्न. तो ट्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इफ यू हैव less money, and if you are a genius person, if you can train yourself to the markets, trading is the best place for you, honestly. So share करें चैनल अपने जानने वालों के साथ as much as possible. Yeah, hope to see you guys on Monday. Take care, bye bye. Guys, just look at this rejection. Just look at this. Oh my god, that's a really big one, honestly. That's a really, really big one. Just just look at this. Free fall movement again from goal. Exactly from our entry point. Okay guys, have a good day. Bye bye.